Assalamu alaikum. My name is Rabail and I have done bachelor's in psychology from Econos National University, and after that I'm doing peer mentoring. I've also done my clinical rotations. I'm taking some sessions online as well. Today our topic is weight loss transformation of mothers who have newly born babies. So first come mother's weight loss journey. With mother's weight loss journey, there are lots of things that we have to cater: their emotional well-being, their physical well-being, and the most crucial factor that a mother is facing her weight, which is gaining after the baby is born. So first of all, I like to share an example of a girl named Sarah. She had a third baby and she found herself struggling with postpartum depression and weight gain, and she realized that she need to prioritize her mental health and physical well-being as well for her family and for baby as well. So through a combination of therapy and a supportive community with balanced diet, she managed to lose 50 pounds, and if she can do it, anyone can do it. Focusing on the Pakistani actresses nowadays, how busy schedule they have. For example, let's talk about Nadia Hussain. Nadia Hussain is a well-known Pakistani actress who is also fashion designer and makeup artist as well. But still, she gives tips on weight loss journey after she had her baby. Now, like Atika Odo, Atika is a veteran Pakistani actress and also an entrepreneur as well, and she is a mother who takes her health very seriously, and she also tells her children to take mental health and their physical health seriously. Focusing on the realistic goals, as a psychologist, I would recommend to focus on long-term goals instead of having small goals. If you will take small steps and initial steps, you can attain long-term goals. Just for an example, you can start with a walk or you can start with balancing your diet. Not that कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को force करें कि you have to achieve this thing, and you may eventually achieve that thing, but it won't be long term. So just take initial small steps, because small steps would last longer in your life. And be self-compassionate, because self-compassionate is the most important thing, and my trick is always to tell my patients to be self-compassionate, and you should have self-love, because when there will be self-love, you won't harm yourself in achieving that goals that are not achievable for you, but having small goals that are going to stay with you for long term. Talking about balanced diet, she should focus on a balanced diet which has non-sugary stuff in it and not that unhealthy stuff. For example, she can take more proteins, more vegetables, more lentils as well, but avoid sugary stuff and avoid taking so much food after little breaks. She should have a meal and she should be full with that meal at a time, but avoid taking excessive meals with short-term breaks. And then she should stay active, and for staying active she can incorporate physical activity in her life, which can be in any way. For example, instead of taking an elevator, she can use stairs, and she can also play with the baby. Dance and play is a therapy which will also increase the bond of the baby and mother, and it would also involve her exercise for the day. And also sleep is very important for mothers. She should aim sufficient sleep so that she could rest and she could take care of the baby as well. Focusing on mental and emotional well-being of mother, it's very important to have a positive self-image of yourself, because positive self-image will let you to cater taking care of yourself. अगर आपका positive self-image नहीं होगा and you are having a negative self-image कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ या अब तो weight gain इतना ज़्यादा हो गया कि lose नहीं कर सकती, तो that would form negative distortion in your mind. So you have to have a positive mindset कि it's not important to have this weight. कोई भी weight ideal नहीं होता. There is no ideal physique. So you have to focus on yourself and be motivated. वरना अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, then you will be having so much stressful thoughts, and if you are still having stressful thoughts and you're unable to cope your negative thoughts, you should go to a counselor, and you should have focused groups and family members around you who should be motivating you to having a healthy lifestyle and a healthy balanced diet as well. Building a healthy relationship with food involves having hunger cues, focusing a healthy relationship with food. Now what's a healthy relationship with food? Basically it is कि आप बहुत ज़्यादा ना सोचें कि अच्छा ये चीज़ है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं खानी, बिल्कुल अवॉइड करनी. अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल करे तो आप उसकी छोटी अमाउंट्स ले सकते हैं. अगर आप इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल उस चीज़ को अपने आप से दूर कर देंगे, तो आपका एक नेगेटिव रिलेशनशिप बन जाएगा विद फूड. So just focus on having a positive relationship with food. I would recommend for every mother to have a support system around them, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं who are not getting support and who are being taunted at home as well from their husband or from their mother-in-law कि weight बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसको decrease करो. इस तरह से एक negative impact बनता है.
तो वी शुड रिड्यूस सच सेइंग्स फॉर द फैमिली. आई एम टेलिंग दिस कि आप रिड्यूस करें, कि आप इस तरह की बातें ना करें विच वुड बी स्ट्रेसफुल फॉर द मदर. और आप फ्रेंड्स भी इस तरह के बनाएं विच मोटिवेट्स यू to have a self compassion and love for yourself, and avoid using social media and comparing yourself with social media. क्योंकि social media क्या करता है कि influencers होती हैं, bloggers होती हैं, they are having edited pictures, they are having makeup and lots more things. So we don't know what struggle they are facing, लेकिन we try to copy them. So we should avoid this thing, क्योंकि जितना आप इस चीज़ को avoid करेंगे उतना आप अपने आप पे focus कर सकते हैं and create self love. क्योंकि self love is the most important thing. If you don't love yourself, you can't spread love around yourself. So you should have a feeling of self-love in yourself. You should accept what flaws you have, and you should not go towards perfection, but you should go towards what's right, what is suitable for yourself. Including habit formation is the key to success. Just for example, there's a key that no one knows कि brain के अंदर हमारे कुछ neurons होते हैं which are developing with time. और जैसे ही हमारी ओल्ड हैबिट्स ख़त्म हो जाती हैं, द ओल्ड न्यूरॉन्स आर डेड एंड न्यू न्यूरॉन्स ग्रो. तो जैसे ही आप चाहेंगे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आप एक पोर्शन ऑफ डाइट लेते हैं लेकिन आपके ब्रेन को उस चीज़ की आदत नहीं है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा. आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, आपको ज़्यादा भूख लगेगी या बहुत ज़्यादा दिल करेगा वो चीज़ खाने का. लेकिन विद टाइम एज यू फॉलो दिस रूटीन आपका यही हैबिट फॉर्मेट हो जाएगा और ब्रेन के अंदर जो ओल्ड न्यूरॉन है विल बी डेड एंड न्यू न्यूरॉन विल बी फॉर्म्ड. सो इट्स जस्ट इन योर हैंड्स विच नो वन नोज. सब लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ये कोई जीन्स में नहीं होता. इफ़ यू वॉन्ट टू फॉर्म अ हैबिट यू कैन ईजिली फॉर्म दैट हैबिट, क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यू न्यूरॉन बन जाएंगे फॉर दैट हैबिट. सो हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ वेट लॉस आर, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है, विच विल कम इन ओबेस, दैट वुड कॉज यू मैनी प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, एंड देन थायराइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, एंड देन देर इज़ हाइपर थायराइड एंड हाइपोथायराइड, जिसके अंदर अगर थायराइड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है यू आर गेटिंग वेट लॉस या वेट गेन. तो उसको बैलेंस करने के लिए एक वेट का होना बहुत ज़रूरी है. नॉट वेरी आइडियल वेट, लेकिन अ मिनिमम वेट विच इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड देन कम्स, अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं तो बेनिफिट्स आर यू विल हैव इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल्स. इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल्स से यू कैन टेक केयर ऑफ द बेबी एज वेल, योर फैमिली एज वेल, एंड यू विल बी मोर एक्टिव and more energetic as well, and then your overall well-being will be enhanced. अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा there may be some insecurities in you, जिसकी वजह से आप around yourself देखेंगे and you will go in stress or anxiety. इसकी वजह से if you balance your weight you will be more confident, you won't be that cautious around other people. Impact of fertility on weight would be वेरी मच क्रूशल फैक्टर टू कंसिडर, क्योंकि अगर आप अंडरवेट होएंगे तो यू विल हैव योर पीरियड्स एट अ लेटर फेज एंड दैट वुड ब्रिंग हिंड्रेंस इन कॉन्सेप्शन. इफ़ यू विल हैव मोर वेट दैट वुड bring problems in your life because you will have the problem of PCOS. For weight loss, you should consider exercise and walk in your daily routine. For example, a 45-minute walk would be really beneficial as it would be a mood booster for yourself. लेकिन अगर due to time constraint आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप वॉक करें, you can avail different things as well. Just for an example, आप घर पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस होती है which require बहुत मिनिमम सी equipment, and then there are online resources as well जो कि ऑनलाइन वर्कआउट्स आपको दिखाते हैं, आप वो कर सकते हैं. You can do yoga as well. As a psychologist, I have some practical tips and advices for newly mothers. First of all, आप अपने आप को सोसाइटी की बेस पे फोकस ना करें. You should use self affirmations for yourself because we don't know. Everyone says which is a myth कि the brain follows the body, which is truly wrong. The body follows the brain. जो जितनी आप अपने आप को self affirmation statements देंगे in a day, ब्रेन वो सुनेगा और वही बॉडी को वो भेजेगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट एक्सेप्ट करेगा उनको. जस्ट फॉर एग्जांपल यू शुड से कि आई एम फाइन, माई वेट इज़ परफेक्ट, आई डोंट नीड टू लिसन टू अदर्स. इस तरह की अफर्मेशन स्टेटमेंट्स आपको भी मोर मोटिवेटेड रखेंगी और आपको हैप्पी रखेंगी इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू स्ट्रेस एंड सीइंग अदर्स कि वो लोग क्या सोच रहे हैं. अपना सेल्फ इमेज आपने खुद क्रिएट करना है. यू शुड बी happy with your own self image. You should not be focusing on what others are doing. Secondly, you should identify your emotional triggers. आप पॉजिटिव लोगों को अपने साथ सराउंड करें, अपने इमोशनल वेलबींग के ऊपर फोकस करें, वर्क करें. इफ़ यू आर फीलिंग दैट कहीं पे जाके यू आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव, यू शुड लीव दैट स्पेस बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग.
और इसके अलावा यू शुड गो ऑन फोकस ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, which you can join to support yourself, and you can even go to therapy if you're having so much negative thoughts about yourself and your body. The most important tip which I use on my patients is celebrating your own victory. Mostly celebrating your non-scale victory which is not too big. Just for example कि अगर आपने आज walk की है तो आप इस चीज़ को celebrate करें. Have a good meal at home, spend time with your husband or with your baby. अपनी victory को celebrate करें कि you went for a walk. इस तरह की छोटी छोटी victories जैसे ही आप celebrate करेंगे, it would bring more positivity in yourself and it would also keep you motivated in doing these tasks more oftenly. So talking about body positivity and self-acceptance is very important for mothers. Just for an example, first of all, आपका mind and body connection होना चाहिए, and for that you can use meditating exercises, and you should first engage in exercises that foster mind body connection. For example, an exercise is of meditation of body and soul. In this exercise you have to tell yourself that your soul and body are separate entities, and you have to think about योर सोल ओनली. अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी बॉडी, हर चीज़ साइड पे रख के यू हैव टू फोकस ऑन योर सोल एंड यू हैव टू मेडिटेट इन अ कॉर्नर फॉर अ वाइल थिंकिंग दैट. इस तरह से क्या होएगा, आपको एक फीलिंग आएगी ऑफ योर सेल्फ लव कि आप किस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं. योर बॉडी, योर नेम, योर जेंडर विच इज़ अ सेपरेट थिंग. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सोल. और जब आप सोल पे फोकस करेंगे तो बाकी जितनी भी चीज़ें वो आपको मैटर नहीं करेंगी. फिर आ जाते हैं हम लोग सेटिंग बाउंड्रीज, बिकॉज बाउंड्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग और व्हेन यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली विद योर हस्बैंड, विद योर इन लॉज, और व्हेन यू आर वेरी सोशल. तो इन योर फ्रेंड्स ग्रुप बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ योर बाउंड्रीज आर नॉट सेट तो लोग आपको कुछ इस तरह की बातें करेंगे विच यू डू नॉट वॉन्ट टू लिसन. तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जा सकते हैं. सो यू शुड सेट बाउंड्रीज विद पीपल एंड यू शुड कन्वे देम कि हाउ टू से नो टू थिंग्स दैट यू आर नॉट विलिंग टू डू. स्टिल इन केसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि यू आर अनएबल टू फाइंड सॉल्यूशंस, you should seek a therapist or you should go to those people or friends which create positivity in your life. Scary Ammi is a platform which is providing solutions to all mothers. So it's very important to have a reminder every day in your life. So keep following Scary Ammi and do like and subscribe for more updates.